not audible. All right. So, okay, sir, sound nahi aa rahi, no audio. Now everything must be fine now. Friends, good evening to all of you. Hello, everyone. So, am I now clearly visible as well as audible to all of you? All right, all clear. Sanket, Kishan, Ashi, and all the other students who are right now live in this, who are watching live this session on the YouTube channel. Good evening to all of you. Now, friends, let's continue whatever we have started a few weeks back in IPMAT Smart Prep 2026. Now we are focusing on data interpretation, and previously, आज की class से पहले, we have covered two sessions specifically on data interpretation, in which I have covered two different elements, two different types of data sets. One was tables, those questions in which the data is given in the form of tables. And in the previous lecture, we did the same thing for bar graphs, right? So these are two very, very basic ways, or I would say generic ways, in which the data is given to us, the tables and the bar graph. Now today in this class, we are going to take on the third, I would say the third way in which the data can be presented to us in a question of data interpretation. And this particular way is called line charts. Now, line charts is lot similar to bar graphs, जो हमने bar graphs किया था ना last class में. So line graphs and bar graphs दोनों similar ही होते हैं, okay? And the amount of efforts that it required to fetch data from a bar graph, same efforts are required to fetch data from a line graph. All right? So जिसने last lecture attend नहीं किया वो आज कर सकता है. Yes राव साहब बिल्कुल कर सकता है. ठीक है, जितने भी lectures हैं, जो भी मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, all these lectures are independent of each other. And moreover यहाँ पे हम अब concept building नहीं कर रहे हैं, because concept building already काफी ज्यादा हो चुकी है. We are practicing different types of questions, okay? Though the level of difficulty of these questions is very low, so at this particular stage I have kept the level of difficulty slightly on a lower side, so that you'll be able to understand different things about data interpretation. And then in the sessions, in the next series, in the sessions which will be coming up later this month or in the next month, right before your IPMAT exam, उन सेशंस में हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड विल रीच द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ आईपीमैट और जिपमैट एग्जाम. ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियसली लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आज के लेक्चर में बैठ सकते हो. डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो जाएगी. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन सॉल्विंग वन अनदर set, a complete set of 5 questions in which the data will be given to us in the form of a line graph. ठीक है, so let me present the line graph in front of all of you. So this is the entire data that is given. Okay, observe this data. The data is very simple, right? The data is very simple. Understand and tell me, give me a confirmation once you have analyzed this data. So data analysis के बाद just मेरे को confirmation दो, chat box में लिखो, and then I'll take up the questions in front of you. आशी, यू आर सेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है. सो आशी डोंट वरी, मैं क्या करता हूं नेक्स्ट सीरीज में लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, उनके भी क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर देता हूं. सो डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, यू जस्ट कीप गिविंग मी सजेशंस अबाउट द सेशंस, अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द नेक्स्ट सीरीज. ठीक है, सो इन दिस सीरीज दैट इज करंटली गोइंग ऑन IPMAT Smart Prep, all the sessions will belong to data interpretation. आज के सेशन के बाद एक और सेशन बचा हुआ है. So data interpretation and the series will be over. And then in the next upcoming series, I'll incorporate the suggestions that you guys are giving.
All right, people. So let's understand typically how we basically read the data from a line graph. ठीक है? Now यहाँ पे बहुत ही simple form of line graph given है. So let's understand first of all about the data that is presented here. So the line above this graph says that the following line graph represents the percentage of males in the school XYZ. Okay. Now again, a typical line graph will have two axes. So horizontal, it's x-axis and vertical is y-axis. Now generally speaking, the values are read on the y-axis. हम जो भी values read करते हैं वो y-axis पे read करते हैं. ठीक है? So यहाँ पे you are given 4 classes, class 5, class 6, class 7 and class 8. So the data is given for 4 different classes, 5, 6, 7 and 8. Okay. And this data is about the percentage of males in each of the classes of the XYZ school. The percentage of males. This is not the number of males. This is not the number of students. This is not the percentage of students. This is the percentage of males. Okay? So this data is about the percentage of males in the 4 classes 5, 6, 7 and 8. ठीक है? Now last class में हमने देखा था bar graphs. So bar graphs में you have seen that they have drawn bars like this. इस तरीके के rectangular structure बने होते हैं. But in case of line graphs, instead of these rectangular structure, यहाँ पे top पे बस एक point consider कर लेते हैं and they will join all these points using the line. तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी एक्सप्रेसिव इन इटसेल्फ. ओके. अब क्लास 5 की अगर बात करते हैं तो क्लास 5 में यहां पे ये जो भी पॉइंट है, आपको जो भी पॉइंट गिवन है, ओके, सो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, हमें वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है एंड विल बी रीडिंग इट्स वैल्यू. बट ये वाला जो लाइन ग्राफ है ये बहुत सिंपल है. यहां पे हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो क्लियरली मेंशन्ड है. ओके. सो हमें ना वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस पॉइंट को हम वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे, देन वाई एक्सिस पे कौन सा वैल्यू होगा. यहां पे सिंस इट इज नॉट 40 नॉट 50, समवेयर बिटवीन 40 एंड 50, तो 40 और 50 के बीच में मैं क्या वैल्यू कंसिडर करूंगा. सिंस ये 40 के पास है तो शुड आई कंसिडर इट एज 42 और 43. ये कंफ्यूजन हो जाता है. बट यहां पे ये वाला कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज द वैल्यूज आर रिटन विद द पॉइंट्स. ये जो पॉइंट्स हैं इनके साथ साथ इनकी वैल्यूज गिवन है. ओके. सो दिस इज द इजीएस्ट वे इन विच द डेटा कैन बी गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ. राइट नाउ फ्रेंड्स, इफ दे वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो वो ये जो नंबर्स है ना ये मिसिंग होंगे. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट को पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करना है and then you will have to pick up the value from the y-axis after you have projected this point on the y-axis, right? So बस यही एक level of difficulty, level of element add हो सकता है, otherwise इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. Okay? So now class 5 में 42% males are there. So if 42% are males, can you quickly tell me what will be the number of or what will be the percentage of females? जल्दी से बता दो. जल्दी से बता दो what will be the percentage of females. I'm just talking about class 5. Absolutely. So percentage of females will be 100 minus 42. That is 58% will be the number of, or sorry, will be the percentage of females in this particular class, right? So likewise, we can find out the percentage of females in each of these classes based on the percentage of males. Okay, right? Now I'll take you to the questions one by one. एक एक करके मैं questions पे लेके जाऊंगा and will be solving those questions one by one. So all of you be ready for the first question. So first question is there on your screen. Let's see who will be the first person who will give me a correct answer for this one.
The number of students in class 5 is 5,000. Find the number of girls. A very easy question to start with. Come on, quickly post your answer. Option A, B, C, or D. Option A, B, C, or D. One easy question to start with, but the next questions will not be that easy. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आगे के क्वेश्चंस के लिए. So the number of students in class 5 is 5,000. This is given. The total number of students in class 5 is given. We'll have to find out the number of girls. So अगर मैं class 5 की बात करता हूं, class 5 में percentage of males, male percentage is given as 42%. Okay, we have already seen. So number of or percentage of females will be 100 minus 42, that is 58%. Okay, so number of females will be 58% of 5,000. Total number of students is 5,000. So 58% of 5,000 will be the answer. So 58 upon 100 into 5,000, 0000 cancel. 58 into 5 is 290 and एक और 0 है यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2900, 2900. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Now this is exactly the reverse of the first question. In the first question, total number of students were given and we were asked to calculate the number of females. Now number of females is given and we need to find out the total number of students. Okay, so go ahead and give me a quick correct answer. Okay, what is the answer for this one? Question 2, Sanket says again option A. All right, Sanket. We'll see what is the correct answer for this. Okay, so let's quickly go ahead and solve this question. The number of females in class 7 is 780. Now class 7, percentage of males is given as 35%. So I can say that percentage of females will be 100 minus 35, that is the 65%. This will be the percentage of females. Now percentage of females corresponds to 780 females. Number of females is given as 780. So it can be said that 65% of total number of students is equal to 780. So using this, I can find out the total number of students. So total number of students will be 780 multiplied by 100 upon 65.
Why? Because 65% can be written as 65 upon 100. Okay, so 100 cross multiply, okay, multiply हो जाएगा and 65 will go in the denominator. So this will be the final calculation, 780 into 100 divided by 65. And इसको अगर simplify करेंगे, I can say 65 multiplied by 12 is 780. So 12 multiply 100, final answer will be 1200. Okay, so 1200 will be the total number of students in this class. Now they are asking about the total number of students in this class. So yes, answer is 1200. Okay, there is no need to find out the number of males separately, right? So 65% corresponds to 780. So what will 100% correspond to? यूनिटरी मेथड से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन ऑप्शन ए. Let's move on and look at the next question, question number 3. The question is, find the ratio of the number of males in class 8 to class 7 if there are 1500 and 1200 students respectively in class 8 and class 7. You have to find out the ratio here. No answers up till now? All right, so option D or option C. So we have got two options, option D or option C among the answers given by Rao and Shankra, Scarlett, Sanket and Ashi. So 5 answers up till now. Meanwhile, Prince, you are asking, I am Amritsar के लिए 12th class में math होना compulsory है. So yes, Prince, I am Amritsar का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इट क्लियरली सेज दैट मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड में. ओके, सो यू कैन गूगल इट एंड मेरे को 2 मिनट दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आई विल आल्सो ओपन द कंप्लीट IIM अमृतसर सिलेक्शन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी प्रोसेस जो है उसको ओपन करके मैं आपको क्लियरली रीड करके बता दूंगा, ठीक है? Meanwhile, let's solve this question. Find the ratio of number of males in class 8 to class 7. Class 8 के number of males, class 7 के number of males. Number of males calculate करने के लिए मुझे किस चीज की requirement होगी? Total number of students की requirement होगी. So total number of students of class 8
क्लास 8 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं? 1500. So let's first of all calculate the number of males of class 8. Now percentage of males in the graph is given as 55%. So 55% of 1500 is the first number. सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसका रेशियो किसके साथ चाहिए? नंबर ऑफ मेल्स इन क्लास 7 का परसेंटेज है 35%. सो डिवाइडेड बाय 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास विच इज 1200. ओके, सो दिस इज इट. आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है. नाउ 1500 एंड 1200 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो अगर मैं ये कैंसिल आउट करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 5 एंड यहां पे आ गया 4 एंड परसेंटेज ऑफ कैंसिल हो जाएगा. 5 into 7 is 35. तो न्यूमरेटर में क्या बचा है? 55 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 7 into 4 28. ओके, now be careful with the ratio. A is to B कैलकुलेट करना है या B is to A कैलकुलेट करना है? सीक्वेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 55/28, 55/28. सी दिस रेशियो 28/55 दिया हुआ है. हाँ, तो दिस विल नॉट बी द आंसर. ऑप्शन डी 55/28 is not present in any of the options A, B or C. So yes, correct answer is option D. All right. केशव, अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज यार स्पैम मत करो. ओके, अपना आंसर सिर्फ एक बार लिखो. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मीनवाइल प्रिंस, आपने एक डाउट पूछा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स और अ फ्यू सेकेंड्स. मैंने आपको बता तो दिया ही है. ऑलराइट, सो प्रिंस, फॉर यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया number 1 is age. Candidate should not be more than 20 years of age as of 1st of July 2025. Okay, this is number 1. अच्छा, ये जो है ये फॉर द बैच ऑफ 2025 to 2030, ये प्रीवियस ईयर की गाइडलाइंस हैं ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट. अभी अपडेट नहीं हुआ होगा इस साल, तो मैं आपको रिफ्रेश करके बता देता हूं. कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 20 years of age as on 1st of July 2026. Qualifying exam, candidates should have passed standard 12th or HSC with mathematics or applied mathematics as a compulsory paper. तो yes, इसके लिए mathematics या applied mathematics होना जरूरी है. And then there is minimum percentage criteria, 60% in class 10th and which is relaxed to 55% for SC, ST, PWD candidates. Right? So this is it, the eligibility criteria. Am I clear, parents? Happy? Rao Sahib, not in this class, but yes, definitely I'll be taking up some session in which I'll be helping you with the backup. So as a backup right now, IPMAT, JIPMAT का exam तो दे ही रहे हो आप. So if you apply for more number of colleges, if you'll apply for more examinations, then that will be acting as a backup plan. So आप NPAT का पेपर दे सकते हो, SET का पेपर दे सकते हो. You can keep opening a lot of options for yourself. Okay, so I've already given you 2 options. Now find the average number of females in all classes if there are 300 students in each class. All right, so let's start solving this one. We will have to find out the average number of females in all the classes if 300 students are there in every class. Now first thing,
एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी बेसिक थिंग, सबको पता है ऑलरेडी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ फीमेल्स कैलकुलेट करनी है हर एक क्लास के लिए एंड देन उसका एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट क्लास द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 58 परसेंटेज, ओके, ऑफ 300, राइट? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द नंबर, ध्यान से सुनना, आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट मेथड। सेकेंड क्लास में नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी 52 परसेंटेज, 52 percentage of 300, simple. In the third class, 65 percentage, 65 percentage of 300, and finally there will be 45 percentage of 300. I will have to add all these numbers, इन सबका sum calculate करना है सबसे पहले, और जो भी sum आएगा उसको 4 से divide करना है, ठीक है। Now one way some of the students will solve this is ये सारे के सारे numbers अलग अलग calculate करोगे and then sum find out करोगे and then divided by 4. Now I'll do it in a different manner. इन सबका sum क्या होगा? 300 कॉमन है तो 300 कॉमन आ जाएगा, so 58 plus 52, so I'll add these numbers, 58 plus 52 plus 65 plus 45, इन चारों को ऐड कर लेते हैं तो कितना परसेंटेज होगा? 220 परसेंटेज ऑफ 300, एंड नाउ आई विल डिवाइड इट बाय 4, ओके। सो आई हैव सेव्ड ऑन कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स सेपरेटली, टाइम सेव हो जाएगा। 220 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 55, so 55 परसेंटेज ऑफ 300, ये कैलकुलेट कर लो and that will become your answer. Answer will be 165. All right. So there is no need to waste your time in calculating these numbers separately. क्योंकि मुझे दिख रहा है 300 कॉमन है तो 300 कॉमन लिया एंड इन परसेंटेजेस को ऐड कर दिया। द सम ऑफ दीज 4 परसेंटेजेस इज 220 परसेंटेज एंड देन एवरेज कैलकुलेट करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय 4। अब 220 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 55, सो फाइनल आंसर विल बी 55 परसेंटेज ऑफ 300, ओके, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव ऑन योर टाइम। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनवाइल सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग सम डिफरेंट क्वेश्चंस। प्रिंस सर, क्या फॉर्म भरते समय अंडरटेकिंग ऑप्शन आता है? प्रिंस, आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग दिस। प्रोबेबली आपने अभी मैथ्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा था, तो यार डेफिनेटली फॉर्म फिल करते वक्त अंडरटेकिंग ऑप्शन हर एक जगह पे होता है। इन सम केसेस दे मे आस्क यू टू अपलोड योर मार्कशीट, सो इफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स देन आई एम अमृत सर आपके लिए नहीं होगा। सर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है धीरे धीरे, सब पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में क्या होगा ये डर लगता है। सो राव साहब, ये तो डर सबके लिए है ना। सी, आप डर क्यों रहे हो? बिकॉज आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है। आपको डर लग रहा है कि आपका एग्जाम गंदा होगा बिकॉज यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। सो ये ठीक चीज है, डर तो सबको ही लगता है यार, तो परेशान मत हो। इट्स जस्ट दैट मॉक पेपर्स जितने भी है ना, मॉक पेपर्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करना, सो दैट ये जो डर है ना ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, ओके। केशव, आई डेफिनेटली डू दैट। मैंने अभी बोला था ना कि इस सीरीज में हम बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना। आने वाले जो सीरीज होंगी, आने वाले जो सेशंस होंगे, उसमें डेफिनेटली लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईपी मैट के लेवल का ही होगा, डोंट वरी एट ऑल। सो केशव, अभी एक और डीआई का लेक्चर बचा है जिसमें हम पाई चार्ट्स करने वाले हैं। पाई चार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो पाई चार्ट्स के बाद फिर हम लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे एंड डेफिनेटली लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी मच हायर देन दीज क्वेश्चंस।
All right, so Kishan is the first one to give an answer. All right, Kishan. And the number of female students in class 5 is what percentage of the female students in class 7 if the number of students in class 5 is 600 and the number of and in class 7 is 500? All right. So let's have a look at this question. Okay. Now I've got answer from Sanket and Kishan. So Kishan and Sanket, just tell me, have you done complete calculation of this question? Yes or no? Calculation किया है properly या फिर नहीं किया? Come on. I'm waiting for your response and then only I'll start with the explanation of this question. तो कैलकुलेशन का मतलब है अपने आप कैलकुलेशन किया है या फिर कैलकुलेटर यूज किया है, एक ही बात है, बट कैलकुलेशन किया है, yes or no? ऑलराइट, सो किशन सेज yes and संकेत also says yes. केशव ने और आंसर दिया है ऑप्शन सी. सो केशव, यू ऑल्सो टेल मी सिंस यू हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम. सो केशव, आई बिलीव आपने भी कैलकुलेशन किया होगा. ठीक है. नाउ ऑल थ्री ऑफ यू जिसने भी आंसर दिया है मेंटली डिड इट. नो प्रॉब्लम केशव, मेंटली किया है, गुड, बट टाइम कंज्यूम कर लिया ना, टाइम ज्यादा ले लिया. हाँ. सो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट द वे यू हैव डन इट इज नॉट करेक्ट. देखो यार, आईपीमैट और जिपमैट का एग्जाम है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ वी आर वेस्टिंग 30 सेकेंड्स और मे बी 1 मिनट इन अ क्वेश्चन इन डूइंग कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी 1 मिनट बाद पता लग जाएगा. ठीक है. सो द वे आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि यार ये कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते थे, कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स सेपरेटली हम वो अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. यहां पे एवरेज करना था, तो क्या किया, सिर्फ परसेंटेजेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, बिकॉज द बेस वाज सेम फॉर ऑल ऑफ देम. ओके. नाउ लेट्स सी what trick can we use. This is not a trick, this is common sense. What can be done to save that precious time in the exam? Okay, aa jao. The number of female students in class 5. So number of female students in class 5 kitni hongi? Class 5 58% females, 58% of total number of students. क्लास 5 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है? 600. तो नंबर ऑफ फीमेल्स विल बिकम 58% of 600. This is the first number. This is what percentage of female students in class 7? Class 7, the percentage is 65. Okay? The percentage is 65. 65% of 500 divided by 65% of 500. डन. ठीक है. अब यहां पे बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, वो तो दिख रहा है. अच्छा, इनटू 100 होगा, वो मैं नहीं लिख रहा. सो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. ओके. यहां पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां सॉरी 0000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्लियरली दिख ही रहा है. तो न्यूमरेटर बचेगा 58 मल्टीप्लाई 6, डिनोमिनेटर बचेगा 65 मल्टीप्लाई 5. ओके. Now 58 multiply 6, 58 multiplied by 6, ये जो नंबर है ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? दिस विल बी 350 के आसपास है ये. ओके, प्रिसाइजली 348. एंड डिनोमिनेटर कितना है? 325.
325. ओके, राइट? ये क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इन दिस केस कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर विल बी मोर देन 100%. ओके, मोर देन 100%. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी. I'm not saying कि every time this particular thing will work, but look at the options. The first option is 89 point something. Second is 92 point something. Fourth is 76 point something. Three options are less than 100 and only one option is greater than 100. In this case, you don't have to do any calculation because clearly visible answer will be more than 100%. So before you start calculations, just have a small look, just spend 1 second, 2 seconds and look at the options and then go for the calculations. All right, ठीक है? So this is what you can do. अब यहां पे अगर मैं options को देख लेता, आंसर की रेंज समझ में आती है अगर, so इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन सी मार्क कर सकता हूं. राइट? आंसर की रेंज क्या है? मोर देन 100. सो मोर देन 100 इतना समझ में आता है. ऑप्शंस को देखो, अगर एक ही ऑप्शन है जो मोर देन 100 है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे मार्क योर आंसर. ऑलराइट, ठीक है? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. Okay, so friends, that's all from my side. I'll take your leave with a promise that in the next class we'll be taking up pie charts. Okay, now pie charts करेंगे हम, and पाई चार्ट्स के बाद नया सीरीज जो स्टार्ट होगा वहां पे जैसे मुझे अभी सजेशंस मिले हैं, आई विल बी टेकिंग अप दोज टॉपिक्स. Skip the last calculation by seeing the numbers. Very good, Sanket. This is what is required from all of you. Very good, wonderful. किशन, ये वाला कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है. So 100% is 325. So requirement is more than 100%. So that's it. वो 10% निकालने की जरूरत नहीं है. Devraj, yes, tell me what do you want? Okay, so the next series, cubes and dices. Sanket, yes, next series में there will be plenty of sessions, 4-5 sessions कम से कम होंगे. So I'll be taking up probably circular arrangements. ठीक है? Then like you suggested, cubes and dices. Okay, right? Ashi, you are asking out of all the graphs, which graph is more important? Ashi, out of all the graphs, all of them are important. ठीक है? देख, एक सेट आना है डेटा इंटरप्रिटेशन का या दो सेट आने हैं. ओके, अब ये जो सेट है ये किसी भी ग्राफ पे आ सकते हैं. इट कैन बी टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कुछ भी हो सकता है. इंपॉर्टेंट एक चीज समझो डेटा इंटरप्रिटेशन में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ना जिस तरीके का ग्राफ है उससे नहीं होता लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड. जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं, that increases or decreases, that controls the level of difficulty. मैं एक बहुत सिंपल सा डेटा दे दूंगा आपको, लेट्स से टेबल्स, टैबुलर डेटा दे दिया, बट क्वेश्चंस इतने भयानक बना दूंगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उनका टेस्ट हो जाए. राइट? सो आपको कैलकुलेशन कितना करना पड़ रहा है, इंटरप्रिटेशन पार्ट कितना है क्वेश्चंस में, ये जो चीजें होती हैं ये चैलेंजिंग होती है और ये क्वेश्चन कंट्रोल करता है, डेटा कंट्रोल नहीं करता. ठीक है? सो किसी एक इजी से डेटा पे भी मैं इतना गंदा सा गंदा क्वेश्चन बना सकता हूं कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पसीने निकल जाए. हाँ, सो डोंट रन टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा. I think as of PYQ, pie and bar graph is more important. Sanket, you are looking at the data for the last 2-3 years, probably 4 years. ठीक है? But do not run after a particular type of data. ठीक है? So line graph, bar graph, pie chart, tables, सब कुछ, everything is important. Okay? सर मैंने ग्राफ्स किए थे और क्वेश्चंस भी वो हो गए, बट थोड़ा टाइम लग रहा है आई थिंक मुझे. यस, सो आशी, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपने पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपको सारी चीजें समझ में आ गई, सॉल्व हो गए, फिर प्रैक्टिस नहीं की आपने, गैप हो गया, तो जो आपने मोमेंटम बिल्डअप किया था वो वापस नीचे आ गया. तो ये
इस टाइप का एग्जाम है जिसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी एरिया है वो भी वीक बनने में टाइम नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल इग्नोर मत करो। एवरी 1 वीक उनको उठाओ, 4-5 टॉपिक्स को उठाओ एंड 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ज्यादा टाइम मत लगाओ बट स्टिल रिवाइज करते रहो। ओके, so will you teach sets and relations? No, Sanket, that is a part of quantitative aptitude. I'll not be teaching sets and relations. तो CDS एग्जाम का बाद जो SSB इंटरव्यू 5 डेज में लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है। ओके किशन, आगे बोलो। ओके, सो संकेत, लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम ये वाला पार्ट आता है एंड सिलॉजिज्म्स आता है। ओके, सेट्स एंड फंक्शंस, रिलेशंस, इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, राइट, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, like different relations in sets, union, intersection, right, complement, ये सब चीजें मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्वांट का पार्ट है। तो वो चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दो मैं पढ़ा सकता हूं बट दैट इज नॉट इन माय डोमेन राइट नाउ। सो आई विल बी टेकिंग अप द लॉजिकल पार्ट ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है, उस एग्जाम में भी इसी टाइप का लॉजिकल रीजनिंग आता होगा। यस क्वेश्चन, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जामिनेशंस जहां पे लॉजिकल रीजनिंग में यही वाले टॉपिक्स आते हैं जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं। क्वांट के लास्ट के 5 क्वेश्चंस भी डीआई होते हैं आशी? नॉट नेसेसरली। 5 क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में भी हो सकते हैं और डीआई के भी हो सकते हैं, राइट। सो देयर हैज बीन इंस्टेंस जहां पे वो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में से आए थे। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, राइट। तो वो 5 क्वेश्चन कंप्लीटली, 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के भी हो सकते हैं। ओके, so there can be different possibilities. Thank you, Ashi. All right, so I believe I've answered to a lot of your queries. So friends, आज यहीं पे ही रुकते हैं and we'll meet in the next lecture wherein we'll be taking up pie charts. पाई चार्ट्स खत्म होने के बाद हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में 2 टॉपिक्स तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। यू कैन गिव मोर सजेशंस अबाउट द टॉपिक्स यू वांट मी टू टेक in the upcoming series, right? So all the best. I'll see you again. Bye bye.